Hello students, as you know that your trigonometry chapter is going on. So again most welcome of you all here in AG Physics. So we will start here new question, that is example number 3 of your 8th chapter trigonometry. Right? So let us start of this question. Listen carefully and try to understand the complete concept of this question. Okay? First of all, read the statement. Consider a triangle ACB. We can say right angled at C, means at C point angle will be 90 degree. Okay, in which AB is given here 29 centimeter and BC given 21 centimeter and angle ABC is equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta, cos square theta minus sin square theta. These things we will find out here. So listen student, angle C is given 90 degree and at angle B, if you will see that things will written as same like it ABC. So midpoint we will include. So we can say at midpoint angle formed, that is theta. Okay, then first of all we will draw diagram here. This is your right angle triangle. Okay, so at point C angle how much given? 90 degree. And angle B given how much? Theta. So this B is given theta, and we can say this point will be A. Clear? So we got here triangle, that is what? ACB. B given that is given there theta, and angle C is equal to 90 degree. Okay or not? Okay. Then we will try to solve this question in different points like that A, C, CB and AB. So we will find out these values. Cos square theta means cos theta and sin square theta means sin theta. All this value we will find out here. Then how we will find out? Listen carefully. We have triangle what? ACB and given term is what? Angle C equal to 90 degree, right? Or angle ABC equal to theta. Say yes or no. And next thing is given here that AB is equal to 29 centimeter and BC is equal to 21 centimeter. Okay or not? Okay. So simply AB is given AB. This is AB. AB means hypo. Hypo is given how much? 29 centimeter. Or BC 20 centimeter, 21. I told you in front of theta you will take perpendicular. So this is perpendicular and B is equal to, this is base and this is your H means hypotenuse. Say yes or no. So firstly those things which are not given we will find out here. Clear? So the perpendicular is not given, AC is not given, AB is given and CB is given. So by Pythagoras Promet theorem. Okay or not? Okay. So we know that H square is equal to what? Perpendicular square plus base square. Say yes or no. Okay, so simply we have to find out P value. So we can say P square is equal to what? H square minus B square. So P value will be what? P is equal to root of H square minus B square. Okay or not? Okay. Then simply write here what is the value of H. H given the 29 centimeter means 29 whole square minus BC means base is given how much? 21 whole square. Okay or not? Okay. Then solve this question and find out a calculation. Clear? So we will solve this question in simple manner. So simply you know that this is what? A square, this is what? B square. Simple to simple method I will tell you. You know that if A square minus B square, so you can apply algebraical formula, that is A minus B and A plus B. तो सेम सिचुएशन वी गॉट हियर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. हाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजी बनाने के लिए. तो हम क्या करेंगे? 21 माइनस 21 A माइनस B एंड A प्लस B. Say yes or no. तो simply subtract 29 minus 21, we will get 8, or here 29 plus 21, that is 15. So we will get what? Root 400. So means this root of 400 means what? 20 square.
तो square to root cancel out, we will get 20 centimeter. So perpendicular value we got here, P is equal to 20 centimeter. Now we have all trigonometric ratios like that. Hypo also we have, perpendicular also we have, and base also we have. On next page I'm writing all values. Hypo is equal to given 29 centimeter and base is given 21 सेंटीमीटर. आप सीधा भी लिख सकते हैं BC, या मैंने BC की जगह सीधा एक पॉइंट जनरली लेट कर लिया B, ठीक है. और AC इज गिवन हाउ मच, वी फाउंड हियर AC मीन्स P, वी गोट हियर हाउ मच, दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू सोल्व, दैट इज व्हाट, cos square theta plus sin square theta. This value we have to find out. So listen student, first we will solve cos square theta plus sin square theta. Sin square theta. One thing I'm telling student, if in your book cos square theta is given, तो meaning of it what? Cos theta whole square, right? If cos theta raised to power 5, तो you can write this one cos 5 theta. Say yes or no. ये एक नॉर्मल बात मैंने बताई, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं अभी इनको कैसे लिखें. और इसको कभी मत लिख सकते हो cos थीटा रेस्ट पर 2, तो इसको कभी मत लिखना भी cos थीटा की पावर 2, ये आपका गलत है, ठीक है ना. अगर फंक्शन की पावर है कुछ भी तो वी कैन से दिस विल बी द पावर ऑफ होल cos थीटा या होल फंक्शन, राइट. इफ थीटा पावर इज गिवन देयर तो इट विल नॉट बी पावर ऑफ होल फंक्शन. से यस और नो. तो दिस अ बेसिक थिंग आई टोल्ड यू, तो लिसन केयरफुल इट. तो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन. तो वी कैन से वी कैन राइट दिस वन cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin theta whole square. Say yes or no. So we will find out cos theta and sin theta value. So we know that according to this formula, Pandit Badri Prasad har har bole. According to this formula, so simply first ratio sin theta up to down. So we will take sine, cos or tangent. Say yes or no. So sin theta we will find out first. So sin theta is what? Perpendicular upon hypo. Perpendicular is given how much? 20 centimeter, or hypo is given, that is 29 centimeter. Then find out cos theta value also. Cos theta is equal to what? Base upon hypo, base divided by hypo. Then put all values here. Cos theta is equal to base is given how much? 21 centimeter, and hypo is given, that is 29 centimeter. Say yes or no. So cos theta and sin theta you can put in this given example, this question. So we'll get what? Cos theta whole square plus sin theta whole square. Say yes or no. Then put here cos theta, 21 divided by 29 whole square. Clear? 21 divided by 29 square, right? And sin theta is given how much? 20 by 29. Say yes or no. Then solve this one. Do 21 square and take this one. So simply how we will solve this one? 21 whole square. This also take square here, divide by 29 square. एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऐसे है a बाई बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर. अगर ऐसे है a b होल स्क्वायर, अगर ये मल्टीप्लाई में, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना. तो कई स्टूडेंट इस पे वो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बच्चे वैसे नहीं होगा. अगर मल्टीप्लाई में है तो सीधा a स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा जाएगा, और a बाई बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वी कैन राइट दिस वन. तो हमने स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर. तो वी कैन से दिस विल बी 20 स्क्वायर और डिवाइड बाई 29 स्क्वायर. ओके, तो ओपन द स्क्वायर एंड फाइंड आउट वैल्यू. 21 square you can find out, and this will be that what? 441, and 29 square will be what? 841, plus, and 20 square will be what? 400 divided by this 29 square will be what? 841. So take LCM students. 841 we will get what? 441 plus 400. Then add both values. After adding we will get what? 841 divided by 841 cancel out, then we will get 1. Say yes or no. So simply we can say we got here cos square theta plus sin square theta is equal to 1.
Proved. Say yes or no. So this is your new formula. Means very important formula. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is the proof of this formula. We can say cos square theta plus sin square theta is equal to 1. We will use this formula in the next exercise. So you have to remember this formula. Listen carefully. Come on the second point. Cos square theta minus sin square theta. Which things we will get? Okay students. Second part we will solve of it. Second part. This one. So I'm solving it on next page. So first I'm writing here all value. Hypo 29, base 21 or perpendicular 20. So again we will find out all values. Cos theta value is what? So you know that Pandit Badri Prasad har bole. So cos theta means base upon hypo. Base divided by hypo means we can say base is given how much? 21 divided by 29. Say yes or no? Or find out sin theta. P upon h means perpendicular hypo. Perpendicular is given 20 and hypo is given 29. Then again put all values in this formula. Cos theta whole square is equal to minus sin theta whole square. Say yes or no? Then we will solve, put all values here. Cos theta value is given. Tell me na. 21 divided by 29 whole square. Plus sin theta is given what? 20 divided by 29 whole square. So this is negative is given. Negative. So don't forget. So 21 upon 29 whole square minus 20 by 29 whole square. Say yes or no? Then now take LCM. Means write first 21 square, that is what? 441 divided by 29, 841 minus 220 square means 400 and 29 square is, that is 841. So take LCM of it. 841 means 441 minus 400. So we will get what? 41 divided by 841. So this is the proof here. Cos square theta minus sin square theta is equal to 41 divided by 841. Say yes or no? So the result of it, you can write this one in divide form also, means fraction form also after dividing. Okay, so we got here very end base result. Basic result of first part is very important. So cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Don't forget it. Okay or not? Okay. So this is the basic understanding of cos square theta plus sin square theta equal to 1. Now next example. This is our example for student. Listen carefully. In a right angle triangle ABC, means right angle triangle is what? ABC. Okay. So right angled at B. Now you can see B is given 90 degree and tangent A means tan A is equal to 1. So verify, we have to hear that to sin A. This is sin A. Cos A equal to 1. We have to prove. So first of all we have to draw diagram here. So this is your right angle triangle. Okay or not? Okay. So he's saying here that at B point is 90 degree. Clear? So any another 2 point you can take according to yourself. This is A point or this is what? C point. This is A point and this is C point. Clear? So first of all write all those things which are given. Given is what? Angle B equal to 90 degree and tangent A, tan A equal to 1. Clear? To prove, to verify, sin A into cos A equal to 1. We have to prove this one. Say yes or no? Clear student? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कि यहाँ पे एंगल कौन सा गिवन है. देखो यहाँ पर एंगल ए गिवन है, यहाँ पर भी एंगल ए गिवन है और एंगल ए गिवन है. तो सब जगह एंगल ए गिवन है, तो एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो अब एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग यू विल सोल्व. तो फ्रंट साइड विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर और दिस विल बी व्हाट? बेस एंड फ्रंट ऑफ 90 डिग्री दिस विल बी हाइपो. से यस और नो? क्लियर? तो वी हैव टू प्रूव साइन ए डॉट कॉस ए इक्वल टू 1. बट angle B is equal to 90 degree. So if it is 90 degree, so we will apply here Pythagoras Prameya theorem. So but tangent A we will take. Clear? So we know that tangent A is equal, tan A is equal to 1. So apply same formula. Pandit Badri Prasad har bole. So don't forget this one. So this is sine, second one cos, third one perpendicular upon base equal to tangent theta. Say yes or no?
tangent theta. But if we are taking here angle A, so we can say this will be tangent A. So we can say tangent A is equal to what? Perpendicular upon base. Perpendicular upon base equal to 1. Clear? तो perpendicular upon base equal to 1. तो we can take, you cross multiply both side. तो we will get here what? P is equal to B. Means perpendicular equal to base. Perpendicular equal to base. Clear? तो tell me student, what is a perpendicular? So you know that perpendicular is equal to what? BC, and base is equal to what? AB. So here given that BC equal to AB. भाई अगर यहाँ पे BC AC के बराबर गिवन है, मतलब BC हमारा गिवन है AB के इक्वल, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो BC है वो हमारा AB के इक्वल हमारा आ गया। तो इसका मतलब हमने दो साइड को इक्वल प्रूव कर दिया। तो जब दो साइड को इक्वल प्रूव किया तो इट मीन दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वी कैन से दिस एंगल C एंगल विल बी इक्वल टू A एंगल। क्लियर? बट नो नीड ऑफ इट, तो वी विल नॉट टेक दिस एंगल मीन्स एंगल C, तो वी विल टॉक अबाउट ओनली एंगल A। तो लिसन केयरफुली, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से कि हम एंगल A की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा BC है इक्वल टू AB, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को हमने इक्वल टू मान लिया K के। क्लियर ना? तो मान लेते हैं अगर BC भी हमारा 2 है, अगर AB भी हमारा 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? BC इक्वल टू AB इक्वल टू 2, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं है कि ये 2 है कितना है। तो जनरली वी विल लेट दैट दिस कैन बी A, K रेशो, K पॉइंट, K वैल्यू, K इज एनी नंबर, K कैन बी एनी नंबर लाइक दैट 1 2 3 4 मीन्स दिस इज द साइड लेंथ of this triangle AB and BC, but here both sides are same, so we can say BC equal to AB equal to K. Clear student? So this effect, so we can say BC is equal to AB. So now you will apply by, you will solve this one by Pythagoras Promet theorem. By Pythagoras Promet theorem, apply Pythagoras Promet theorem, we will get what? This is hypo means what? Come on next page students. We can say hypo square equal to what? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सही है और नो? अब लिसन स्टूडेंट, एच स्क्वायर पी स्क्वायर, तो राइट साइड नेम, तो एच इज इक्वल टू व्हाट? AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज व्हाट? इक्वल टू, बच्चे इक्वल टू, ओके। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल व्हाट? BC स्क्वायर प्लस बेस इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें H निकालना है। भी H की वैल्यू हमारा निकल जाए, क्योंकि हमें P और B की वैल्यू तो पता है, दोनों की वैल्यू K है, मतलब सेम है। क्लियर? तो वी नो दैट BC इक्वल टू AB, BC इक्वल टू AB इक्वल टू K। से एस पुट ऑल वैल्यू हियर, फाइंड आउट AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC बोथ आर K, तो वी कैन से K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, वी विल गेट व्हाट? AC स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। ओके और नॉट? ओके स्टूडेंट, तो फाइंड आउट AC वैल्यू, तो AC इज इक्वल टू व्हाट? तो राइट हियर ना, AC वैल्यू विल बी व्हाट? टेल मी स्टूडेंट। तो वी गॉट हियर दैट अंडर रूट 2K स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी बताई है ये चीज कि अगर आप रूट के अंदर दो वैल्यू ऐसे गिवन है मल्टीप्लाई में A और B, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट A और रूट B। इसको कई स्टूडेंट क्या करते हैं, A प्लस B को भी लिख देते हैं रूट A प्लस रूट B। बच्चे ये टोटली गलत है। You cannot write under root terms, you cannot apply under root on a plus. First you will add both, then we will solve this one when we will get one value in under root. Clear? तो in multiplication we can write it separate. Clear ना? देखो if you have root 2 into root 3, तो you can write root 2 into 3 means root 6. Clear? तो come on the topic here, तो we will get what? AC equal to what? You can write root 2 root K square, you can cancel out root 2 square, so we will get what? K under root 2. So this is the value of AC. Okay or not? Okay. Now H is given K under root 2, base is given K, नहीं हाँ, perpendicular is given K and base also given K. Now we got all three values, means hypo H is equal to what? K root 2, base we will get what? K, and perpendicular is given here what? K. Okay or not? Okay. Now we have to prove here what?
for proving, simply tell 2 sin A cos A equal to 1. Come on the question according to the question. So 2 sin A into what? Cos A equal to 1. Then find out sin A cos A value. So sin A we will find out, cos A we will find out. So you know that same formula you will apply. So you can say sin A, so we can say P by H. So P is given what? K, or H is given what? K root 2. So you can cancel out. So we will get 1 by root 2. So find out cos A value. Cos A is equal to what? B by H. B by H. So we can say B value is what? B value. K or H value is what? K root 2. So same you can cancel out. We will get here root 2 in both cases. Say yes or no? Say yes or no? So simply put here both value. So left hand side, so you can say 2 sin A into cos A. Clear? तो पुट sin A is first you will write left hand side. तो ऐसे इक्वल टू नहीं लेके चला सकते आप इसको. sin A डॉट cos A, मिस्टेक पे ध्यान करना है. 2 इंटू, तो sin A की वैल्यू कितनी है? 1 by root 2. cos A वैल्यू इज गिवन 1 by root 2. तो वी विल गेट वट? 1 multiplication, 1 into 1 1, root 2 we will get what? root 2 square. Clear? So we can cancel out root 2 square. So we will get what? 2 into 1 by 2. So cancel out equal to 1. So equal to right hand side. So we proved here what? 2 sin A into cos A equal to 1. Hence proved. Okay or not, okay student? So this is your example number 4. Come on next example, example number 5. Hello students, see next question, that is example number 5. देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, बच्चे जब P जो बीच में होता है ना उसी पे राइट एंगल बनता है, राइट एंगल बीच वाले पे राइट एंगल बनेगा जो बीच में होता है, ठीक है. एट P, राइट एंगल एट P, राइट. तो ये भी पहचाना, तो और गिवन भी है यहाँ पे. ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू equal to 1 centimeter. Determine the value of sin theta and cos theta. So first of all draw your triangle here. See here student, this is your right angle triangle. So we can say it will be right angle at P point. So you can select any another point. So this can be Q or this point can be O. Say yes or no? Clear? Means O P Q. Clear? So simply given terms you will write first. Given. So given there OP is equal to 7 centimeter. Say yes or no. Second, OQ minus PQ is given 1 centimeter. Then find out OQ equal to 1 plus PQ. Little bit we arrange it. हमने बस इसको इधर की साइड शिफ्ट कर लिया, तो आपको पता है कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव बन जाती है. से yes और नो. अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 1 है, अगर आप इस b को उधर ले जाएं तो ये प्लस का इधर, तो उधर जाके वो किसका बन जाएगा? माइनस का. ये एक एग्जाम्पल था. क्लियर? तो यहाँ पे देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो वी कैन राइट ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू. से yes और नो. तो सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा. साइन थीटा एंड कोस थीटा. क्लियर? तो देखो साइन नॉट थीटा, दिस इज साइन क्यू. साइन क्यू एंड कोस क्यू. तो क्यू एंगल, तो वी कैन से दिस एंगल वी विल इंक्लूड. तो फ्रंट साइड विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस और दिस विल बी हाइपो. क्लियर? तो फॉर फाइंडिंग साइन क्यू एंड द कोस क्यू, तो फर्स्ट वी हैव टू डू मीन्स प्रोसीडिंग फॉर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड एच, perpendicular, base and hypo. All this value we have to find out first, determine all values first, then we can find out easily sin q value and cos q value. Clear? Then how we will find out? So same you will apply here, Pythagoras Permet theorem. Pythagoras Permet theorem. Apply hypo square equal to what? Perpendicular square plus base square. Then write all side here. Hypo is given what? OQ square plus परपेंडिकुलर इज गिवन व्हाट? ओपी स्क्वायर. भाई जैसे साइड गिवन ऐसे ही लिखे, पहले परपेंडिकुलर लिखे ओपी. भाई अगर यहाँ पे बेस लिखोगे तो आप बेस वाली वैल्यू लिखोगे, परपेंडिकुलर गिवन है तो आप परपेंडिकुलर वैल्यू लिखोगे इधर, और इधर क्या आएगा तुम्हारा पी क्यू होल स्क्वायर. से यस और नो. देन पुट हियर ऑल वैल्यूज. तो ओ क्यू वैल्यू इज गिवन, ओ क्यू वैल्यू दैट इज व्हाट? 1 प्लस
PQ whole square equal to, say yes or no. And OP is given what, 7 square plus PQ value not given, so we will write it as it is. तो open this square, तो you know that we will apply here identity. तो a plus b whole square, तो we can write a square plus b square plus 2ab. Clear? तो a is equal to what, 1 and b equal to what, pq. Then apply this identity here. तो 1 square plus pq square plus 2 into 1 into pq. Say yes or no. Equal to what, 7 raised to power 2, so we'll get 49 plus pq square. Okay or not okay? Then open all these things. So 1 plus pq square plus 2 pq. Then 49 plus pq whole square. Mathematical term you can take one side, other things you can write in another side. So we can say pq whole square plus 2 pq. So this pq square will come in this side, become negative pq whole square. Then 49, this one moves another side, become what, minus 1. Clear? So you can say pq square to pq square cancel out. We'll get what, 2 pq is equal to 49 minus 1, that is 48. So pq is equal to what, 48 divided by 2. We'll get what, students tell me? 24. Okay or not okay? So we got here pq is equal to 24. PQ is equal to 24. So PQ is what? Tell me student. PQ is equal to, so we got base is equal to 24 centimeter. Then find out P means OP. Then find which things is given here. Listen student, tell me fast. देखो OP is given how much? This is equal to 7 centimeter. Then find out H value. H means what? OQ. OQ is equal to 1 plus PQ we got. PQ how much there? 24. So we will get that is 25 centimeter. So this is equal to 25 centimeter. 25. Now we have all values. So simply you can write perpendicular is equal to 7 centimeter. Base equal to how much? 24 सेंटीमीटर. कई बुक्स में सीधा पी क्यू से डिनोट किया हुआ है, आप टेंशन मत लेना. मैंने वो पी क्यू के झंझट को खत्म करके सीधा आपका पी बी एच में लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. We'll get a accurate and same result. We'll get full mark in the exam if you will do SM like it. Sure, giving guarantee is equal to what? 25 centimeter. Okay or not okay? Then we have to find out what? Sin Q and cos Q. So simply first we will find out sin Q value. So we know that same Pandit Badri Prasad, this point you will use. So sin what? Perpendicular upon hypo. So we can say P by H. So sin Q is equal to perpendicular is given how much बच्चे? 7 और H is given how much? 25. Clear? Then find out next value. Cos Q. Cos Q is equal to what? B by H. B is given how much? 24 and H is given 25. Clear? So this is your example number 4. So next time I will discuss with you all complete 8.1 exercise. So we'll create video on complete 8.1 exercise. Okay, try one question with yourself. Clear? So for getting proper understanding. Okay student, all the best.